I used to believe we were burning on the edge of something. Hi guys, once again welcome back all of you on Asoka English Study. So guys, today I am gonna discuss the learning and acquisition. Yeah, so second language learning और acquisition इसमें डिफरेंट देखेंगे और क्या होता है। तो ये नोट से आपको फायदेमंद होगा, तो चलिए देखते हैं। Language can be considered a method consisting of signs and the symbols. These signs symbols are used to express the idea and emotion. यहाँ पे CA छूट गया है, so here communication is done through a process of encoding on the part of speaker and decoding on the part of listener. So on the part of listener. Next, the language that a child learns from the birth is his mother tongue. So it is his first language, which is symbolized as a first language. L1 मतलब first language. So a language learnt after first language is considered the second language, which is symbolized as a first language. And L1 first language. The process of learning the second language is known as a second language acquisition, means second language acquisition. So it is, यहाँ देखेंगे कि it is in the context of a spoken language. So next आगे देखते हैं. The process of acquiring the second language happens subconsciously during the communication, जिसको SLA मतलब second language acquisition in general terms is how we learn a second language in the Hindi speaking state of India. Generally, so generally here talk about here. So generally एक बच्चा जो है, अगर देखा जाए तो इन जनरली यहाँ पे जनरली जो है ए चाइल्ड जो है, ये चाइल्ड क्या करेगा, लर्न्स करेगा हिंदी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से हिंदी सीखेगा. फिर यहाँ पे इट इज हिज फर्स्ट लैंग्वेज, L1 मतलब फर्स्ट लैंग्वेज. इंग्लिश इज लर्नड बाय प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का. इफ ही गेट्स it in the formal classroom environment, environment, and it is considered learning. It can also happens in India or Jharkhand that is child. A child speaks a regional language like Khortha, Bhojpuri or Bangla as his first language. In that the case any other language he started learning, acquiring immediately after. This is his second language. L2 मतलब second language. It may be Hindi or English or maybe some other रीजनल और फॉरनर, जिसको फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं. यहाँ पे ई लिखना है, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज. सो लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स टू द फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ ए लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड languages, so language acquisition means acquiring the language with title or non-formal training or learning. So here if a person goes to a foreign
language speak a language different from his native language. So he needs to learn that foreign language, and it can be done with little formal learning of the language. Next, through everyday interaction with the native people in the marketplace, workplace, malls, office, and somewhere any else. Okay, so next. When a child acquires a language spoken by his parents at home, and he learns it naturally without consciously understanding and analyzing analyzing its syntax and speech data. But when he goes outside and comes in contact with another language, he goes through a process of understanding and analysis of its speech data and syntax. It is language learning. The second language learning requires formal error correction. However, all linguistics do not agree with this theory. This theory. The important theories and approaches regarding the second language learning or acquisition are the monitor theory, the behaviorist approach, and the rationalism and cognitive approach, and constructivism. So according to the monitor theory of Stephen Krashen, so acquiring and learning are two different processes. Krashen suggests in his theory that the acquisition of a language is a natural conscious language of learning conscious, and because it requires aware efforts. So behaviorist approach sees language learning as the formation of lingual habits based on the concept of stimulus and response. So next, the cognitive approach seeks to discover underlying the motivations and deeper structures of human behavior by using a rational approach. So it asserts that that meaning, understanding, and knowing are significant data for psychological study. So यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन इज इनेटली मतलब शुरुआती से डिटरमाइंड दैट वी आर बोर्न with a built-in device that predisposes us to language acquisition. So it is called language acquisition device, और हम लोग कहते हैं language acquisition device. देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट ये सब बिलीव करते हैं कि all the human beings from their
ऑन इमेज ऑफ रियलिटी। सारे जो कंस्ट्रक्टिविस्टिस है वो सारे चीज़ों में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो रियलिटी इमेज पर, अपने इमेज पर फॉर्म बना के। सो फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम हो जाएगा ओ। सो हेंस मल्टीपल अपोजिंग द मेथड of recognizing and describing are equally and valid in the process of learning as a second language। चलिए थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन है कि इट इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ये अनकॉन्शियस होता है, पता नहीं और सीख जाते हैं। सो इट डज नॉट एसेंशियली रिक्वायर टीचिंग, इसको टीचिंग की जरूरत नहीं पड़ता है। द चिल्ड्रेन कंट्रोल द स्पीड ऑफ लर्निंग, ये जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो कंट्रोल कर लेते हैं, समझे। और लर्निंग में देखिए, लर्निंग इज ए कॉन्शियस, एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। इट्स रिक्वायर्स फॉर्मल टीचिंग, एक टीचिंग और मेथड्स का जरूरत पड़ता है। लेकिन टीचर कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ लर्निंग, टीचर इसमें स्पीड लर्निंग को कंट्रोल करता है, जो सीखने की क्षमता या स्पीड है वो कंट्रोल टीचर करता है, लेकिन एक्विजिशन में खुद ही सीखने वाला ही कर लेता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट फिर हम लोग अगले में डिस्कस करेंगे। अगर न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कर लो और सारे नोट्स आपको मिलेंगे यही यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।